Monster walk, a favorite. The tinier the steps, the better it is, huh? But listen, forget tiny steps. You've taken a giant leap. War इतनी बड़ी hit हो गई है. Massive blockbuster. कैसा लग रहा है? I think थोड़ी बहुत nervousness होती है first day. हाँ. फिर उसके बाद I think it settles in when you know कि लोग प्यार दे रहे हैं मूवी को and you know उनको genuinely पसंद आई है. तो I'm feeling very happy now. जब ऋतिक रोशन सामने हो, तुम फोकस कैसे करती हो किसी चीज पे यार? Exactly जैसे मैं अभी वर्कआउट करते हुए आपके क्वेश्चंस पे फोकस कर रही हूँ. ऋतिक तो looks super hot in the movie, but madam, what was that bikini shot? और सच बताओ, उस शॉट से पहले कितने दिनों तक फास्ट किया था? एक्चुअली एक भी दिन फास्ट नहीं किया क्योंकि मैं यहाँ रोज़ आ रही थी और 2 घंटे वर्कआउट कर रही थी और उसके बाद मैं 4 से 5 घंटे तकरीबन अपना सायो व्हील एंड स्विंग पोल की क्लासेस लेती थी. तो आई थिंक मेरा फिजिकल हार्ड वर्क जो फिजिकल वर्क होता है वो इतना हाई इंटेंसिटी पे था. तो आई डिडंट नीड टू स्टाफ, पर ऑफ कोर्स मैं हेल्दी खा रही थी और आई मीन लो कार्ब डाइट पे थी. वो दिख रहा था बहुत. हाँ, बट मैं कभी भूखी नहीं मरी या भूखी नहीं सोई या ऐसा नहीं था कि ओ शिट मुझे खाना चाहिए और मुझे पानी पीकर पेट भरना पड़ रहा है. शुद्ध देसी में तो बहुत ही स्वीट प्यारी देसी लग रहे थे. एंड देन बेफिक्र के टाइम पे वाज लाइक ऑलमोस्ट लाइक यू वर रीबॉर्न एंड देन अगेन फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन. सो कैसे मैनेज किया? पर ये बहुत ही एक्साइटिंग है किसी भी एक्टर के लिए. मुझे अभी भी याद है जब मैं आदि से मिली थी राइट आफ्टर शुद्ध देसी, उनसे वैसे इतनी मुलाकात पहले नहीं होती थी. हाँ. तो उन्हें लगता था मैं तारा शुद्ध देसी की तारा हूँ रियल लाइफ में. तो उन्हें लगता था पता नहीं ये ओपन रोल कर पाएगी नहीं कर पाएगी बिकॉज यू नो शी हैज़ दिस. सबको ऐसा लगता था. हाँ, तो जब मैंने बेफिक्र किया आयरॉनिकली लोगों को लगने लगा कि अब मैं पता नहीं इंडियन रोल कर पाऊंगी कि नहीं. So I take it as a compliment. लेकिन ये हम बात कर रहे हैं कि you know you work so hard. मुझे लगता है बहुत बातें हो गई. Let's go. Let's go. Let's do some treadmill. I remember एक बार हम बातचीत कर रहे थे and you said कि out of all the characters you've played, you are closest to Shaira as a person and she's quite out there. No, actually शायरा का second half मुझसे काफ़ी मिलता है. First half पे मुझे बहुत काम करना पड़ा था because मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं कैसे coolly, you know how to be that cool because I don't think I'm that cool in real life. और मुझे नहीं लगता मेरे में कभी उतना confidence या courage होगा to go up to a guy who I like and pick him up at a bar. You never asked anybody out? No, never. So, and I don't think I can because मैं बहुत ही awkward हूँ, मैं socially बहुत awkward हूँ and I think I'll end up having a nervous breakdown if I have to go and make that effort. So, speaking of nervous, audition याद है यशराज के लिए? काफ़ी auditions दिए मैंने. काफ़ी दिए? बहुत auditions. और फिर भी अपने डेब्यू डायरेक्टर मनीष शर्मा से डर रही थी तुम? Oh हाँ. उससे ये कैसे पता? मुझे बहुत खबर है. I think also क्योंकि मेरी पहली मूवी थी, मैंने कभी एक्टिंग कोर्स नहीं किया था. मुझे acting के बारे में पता dancing, नहीं. no acting course, and you just went straight in. Yeah, I just went straight in because I thought that I love films and you know I could do this. I don't know, you know this, you have this inner voice. Yeah. आपको लगता है कि पता नहीं क्यों बट शायद आप ये कर सकते हो. बहुत हमने पार्क में टहल लिया है. मुझे लगता है हमें थोड़ा पेस पिक अप करना चाहिए. What do you think? Come. I've already started. Start! Oh God, mine's not starting only. So listen, I was talking to हमारी गुरु यास्मिन. Yeah. और वो मुझे बता रही थी कि वॉर के टाइम पे she worked you to the bone. उनके पास 10 हफ्ते थे आपकी बॉडी चेंज करने. पर आप इस स्टेज पे पहुंचे हुए हो in so much shape कि आप कह सकते हो कि चलो यार आज बंक मारते हैं. तो आप बंक क्यों नहीं मारते? There are times जब मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है मैं और सब ऐसे हैं. मैं बंक मारती हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं मारती हूँ, उनको पता नहीं चलता है और क्योंकि मैं ज़्यादा रेगुलर हूँ. बट देयर आर टाइम्स व्हेन यू नो आई एक्चुअली मिस वर्किंग आउट क्योंकि अब आई थिंक आपका एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाता है. देयर आर टाइम्स व्हेन यू फील in fact more energetic and active after your workouts. So I feel you kind of make it a part of your routine and a part of your life and it sets your routine basically. Yeah. So then you start actually missing it if you're not doing it. Next time you guys think about hitting the snooze button, remember that. The body. Yeah. And the shoulders will be relaxed. Yeah. Back neutral and pull. Lower the chest.
रणवीर सिंह हैज अ बेटर बॉडी देन सुशांत. ओह गॉड. मैं बहुत ही बेसिक लड़की हूँ, मेरी बहुत ही बेसिक नीड्स है, मैं बहुत सिंपल हूँ. और ये शादी के लिए बिल्कुल तैयार है. Wasn't that some amazing #EduTalkInfo for all you fitness fans? अभी तो सिर्फ शुरुआत है. Tons more fun and fitness coming right up. हमने इतनी मेहनत की है कि we deserve this break. Welcome to my Absolutely. favorite part of the show, जिसका नाम है Getting Light with Electrolytes. Fabulous. हम चिट पिक करेंगे one Okay. at a time. Okay. उसमें जो लिखा है, if we agree with it, shot, and if we've not, then no. Okay. Okay? So And I'm a good going to be price taking for lots both of us. shots. Okay. So you want to start? Pick a color. Which one to pick? Okay, I'll pick the red. Thought your co-star had a better body than you. Of course, I've thought that. So I take a shot. Yeah, but if you've worked with Hrithik Roshan, then I mean, obviously- I mean, if I don't drink, people will yeah, think even I'm crazy. I worked with John Abraham. Yeah. So, I mean, cheers to cheers that. to that. Yeah. Chin chin. I worked with Akshay also. It's the most bitter lime water I've Yeah, it's ever a had. wake up call, but we deserve this. This Okay, is like. fab. Okay, let's go. I think I have the sexiest neckline in the industry. नहीं, मैंने कभी से- Dude, Other people might think so. मैंने तो नहीं सोचा. What do you think about I that? think it's a very. I'm just like noticing it. I'm checking it out That's now. really weird. बहुत अच्छी neckline है. अति नहीं, सुंदर. मुझे नहीं लगता कि मेरी सबसे सेक्सी है, पर अच्छी है. Neckline बहुत अच्छी है. I I think think I बहुत think you अच्छी should. है. I think you should take a Why shot. should only I take a shot? Do you think your neckline is sexy? Of course it is. Okay. You think, and I'm going to keep you company, so I'm having another bitter shot for Let's you. go. Next. Okay. Ranveer Singh has a better body than Sushant. Oh God. Then Now, you're ये screwed either way. comparison- ये क्योंकि compar- क्योंकि पियोगे तो उसका मतलब रणवीर सिंह की बेटर बॉडी है, नहीं पियोगे तो उसका मतलब है सुशांत की बेटर बॉडी है. I think दोनों की बहुत ही अच्छी बॉडी है. I think वो दोनों ही equally hard work करते होंगे. Oh, just drink the shot already. Okay. I won't shop for a year if I find my true love. Shit. You're a shopaholic. I know you're a shopaholic. I'm not a shopaholic. I'm very actually. Yeah, I yeah. love shopping, You love shopping. but it's not like I'll die if I don't. हाँ, the same. तो अगर आपका मतलब the real असली प्यार of your life आ जाता है तो आप एक साल तक शॉपिंग नहीं करोगे? हो सकता है Yeah, यार. मैं कर सकती हूँ. That means कि हम दोनों- सेल्फ कंट्रोल है मुझ में. Means हम दोनों प्यार के बहुत ज्यादा बहुत भूखे हैं. भूखे हैं, प्यासे हैं. प्यासे हैं. Are we gonna say no to something? Like the last one. Because that was kind of like we Such neutralized that cheaters. one. Okay, check out what workout routines your peers are up to. Oh god, yeah. I mean, Yeah. But do you actually like check out people who you don't know and check out their workouts? I don't stalk, but I check out. Yeah, I mean, I go through like. It's called stalking. Okay. No, I don't stalk like 24 times. I'm 24/7. I'm like on it. Oh, who's doing किसने what? अच्छा क्रंच किया, किसके abs अच्छे लग रहे हैं, नहीं, किसका नहीं? नहीं, वो नहीं करती मैं. None of But that. I do take advice from That's good. everybody. Yeah. मुझसे तो कभी ली नहीं. I'm deeply hurt and offended. I'm kidding. Okay. I'll have to drink shots to shut my mouth now. Don't go too far. So Vani, before you got into this line, Yeah. तुमने एक tourism की डिग्री की थी. Yeah. क्यों तुम्हें लग रहा था कि तुम बहुत सारे वर्ल्ड टूर्स करोगी शूटिंग में? I think it was God's plan, huh? For me. है ना? Which was the most exciting place you've Changed been it. to in all your shoots? Like which was a country that you absolutely loved, a city that you loved? So I loved Paris. मेरे Yeah. 3 महीने वहाँ पे स्टेशन थे हम लोग and हम सबको अपार्टमेंट्स मिले थे रहने Wow. के लिए. Yeah, like you know, beautiful apartments. Taking a 1-second break before the next set. You know I lived there, right, for 2 years. You did? So Oh, my degree was in wow. politics or French और मैंने 2 साल फ्रांस में ही अपनी डिग्री की थी. It's my favorite city. But बहुत ज़रूरी सवाल ये है कि वहाँ पे कोई ट्रेनर लेके गई थी या कोई मिला? मैं वहाँ पे लोकल जिम में जाती थी. मैं एकदम लोकलाइट की तरह रह रही थी. मेरा एक्सपीरियंस ही लोकलाइट टाइप था. मैं सुबह 5 बजे उठ के अपनी फ्रेंच क्लासेस के लिए जाती थी. वहाँ हेडफोन्स लगाती थी और सो जाती थी. Really? और फिर उठती थी एंड आती थी एंड आई वाज लाइक हाँ सब फ्रेंच आ गई दिमाग में. तुम्हारी और रणवीर की और भी बहुत सारी एक्सरसाइज हुई थी इस मूवी में. Oh, एक और set? So I'll much. give you 50. Okay. Like there was a lot of kissing in that movie, dude. Like lots. So what is this thing he said somewhere? कि she kisses like a fire-breathing dragon. ये क्या है? आई थिंक वो बस मुझे बुली कर रहा था और तंग कर रहा था एंड आई थिंक वो हम दोनों का एक बहुत ही Slightly. Yeah.
It was such a fun relation, I think. It was Yeah. so nice, the equation and everything. The chemistry showed. For listen, this is really tough. This tricep. This is one of your But it- favorite exercises. But मुझे क्यों मरवा रहे I हो think आज? मैं gym आते ही बोलती हूँ triceps, Oof. hips and legs and arms and this and that and then like And बचा everything. क्या? This is the exercise you are obsessed with. इस exercise का नाम क्या है? Halo. Yeah. और इसका who told you about this? So I have always asked, like I keep chewing Yasmin's brain about the dip, you know, that you get. Sorry, I'm gonna. In the arms. Yeah, right here you get the little dip. हाँ. So I keep eating her brain about it, and then one day I think me and Katrina we were on the Changed. treadmill, and she. Katrina, you and Katrina. Yeah. Okay. So she told me for the dip that Halo's really good, and I think I'm so obsessed with that dip तब that से I. ये obsession बन गया है आपका. Yeah. So and I genuinely enjoy it. I don't find it that difficult. That's one obsession. This is apparently another. Yeah. Listen. छह तेरे हैंडबैग में मिले, 3 तेरी गाड़ी में. What is this obsession with sunglasses? I like sunglasses. Like I feel I'm like that ostrich, you know. I feel like वो sand के अंदर Like you're रेत के hidden. अंदर गया मुंह How many तो do you कोई मुझे have? देख नहीं सकता. How many do you have? Have you counted? No, I don't have too many. Don't lie. You've got about 60 or 70. No. Are you sure? I'm pretty sure I have not more than 50. मैं बहुत ही basic लड़की हूँ. मेरी बहुत ही basic needs है. मैं बहुत simple हूँ. मैं सिर्फ उतना ही खरीदती हूँ जितनी ज़रूरत होती है. और ये शादी के लिए बिल्कुल तैयार है. ये एक बहुत ही अच्छा ऐड जा रहा है शादी के लिए. कोई शादी.com. On a scale of 1 to 10, love life कैसी है? The less I say, the better it is. किस किस्म का इंसान ढूंढ रही हो? कौन है ये बंदा जो नहीं मिल रहा है? My friends are also hopeless in life. They're not finding me I anybody feel the interesting. same way. मुझे लगता है कि Like you मेगन मार्कल का इतनी अच्छी दोस्त थी. She introduced her to Prince Harry. Like I don't have those kind of friends. Like I know. where are they? Where are my friends? What are my friends doing? I know. But tell me something. जो बंदा है fit होना जरूरी है. With someone who's healthy at least, like Yeah. he's fit and healthy. And tell me something. Is going to the gym together sexy, or you feel कि gym time is your me time? फिलहाल तो मैं me time के लिए जाती हूँ, but I don't know, not really thought about it. But it'll be nice. It'll be cool to work out together. Yeah, I think it's cute. What about a romantic film? Who are you dying to do one with? सारे अच्छे हीरोज के साथ तो कर लिया. Yeah, I don't know who to name now. But there's still so many. Shah Rukh Khan. Oof. Once in life. I Oof. think I definitely hope कि एक opportunity आए जहाँ पे मुझे उनके साथ काम करने को मिले. I'm sure मिलेगा. And best body? Who do you think's got the best body? Male or female? I think I just recently worked with Tiger and Hrithik. They both have phenomenal body. And in females, I think Katrina Yeah, what a body. She's and amazing. Malaika, Yeah. um, Full on inspiration. Deepika, everybody. Yeah, you're I right. think everyone. We're dying. I love feeling that love that people give. So Vaibhavi initially thought कि मैं body balance ही नहीं है. हे भगवान, you're single. Come on. Who's single? Apart from us, it looks like no one. Who says fun and learning can't be done together? Lots of hashtag EduTalk Gyan coming right up. I love you still in Nashe Se Chad Gayi. That Thank was you. some 550 million views हो चुके हैं. Something 500 plus something. Insane. What a high that must be. I love feeling that love that people give. उसके लिए क्या prep की थी? That was more dance prep. हाँ, जब मैंने sign किया था, I wasn't that fit. हाँ. And everybody used to think कि नहीं पतली है, you know, she can pull off shorts, she can pull off a bikini and everything because everybody thinks आप पतली लड़की है. But yeah. जब आप पहनते हैं एक costume, तब आपको दिखता है कि you know कैमरा क्या कैप्चर करेगा, कौन से एंगल से कैप्चर करेगा, तो आपको एकदम परफेक्ट बॉडी शेप में आने के लिए बहुत टोनिंग और मेहनत की ज़रूरत होती है. सो वैभवी इनिशियली थॉट कि मैं बॉडी बैलेंस ही नहीं है. एंड वंस आई रिमेंबर रानी हैड कम विद वैभवी कि चलो मैं देखती हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, लाइक यू नो उन्होंने और थोड़ी वो बहुत बहुत rehearsals इतनी करी अच्छी हैं. डांसर है. And they're like, okay, show whatever, you know, don't take pressure, don't take too much stress. जो भी होता है, थोड़ा बहुत करके दिखा दो. और वो और कह के नशे से और चढ़ भी गई. प्रेशर आ जाता है. और नशे से चढ़ गई. And we started dancing and I thought was so bad. I think that was like I disappointed myself and them and I was like, hey भगवान, you know. And they're like, ये तो काटना पड़ेगा because ये तो डांस ही नहीं कर पा रहे. I couldn't dance. उसके बाद I think मैंने इतने घंटे दिए डांस को कि कोई बोला पाए कि यू नो मैंने लाइक आई डिडंट वांट टू
embarrass her or not make her work look. तो वानी मैं अपने टिकटॉक यूजर्स के लिए एक ऐसी सीरीज बना रही हूँ जहाँ हम उनको दिखाते हैं हाउ टू डू एन एक्सरसाइज करेक्टली. बहुत सारे लोगों को लगता है दे नो हाउ टू डू अ क्रंच. इट्स Yeah. वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एक्सरसाइजेस, Yeah. बट दे गेट इट रॉन्ग. And I know you're killer at it. So I'm gonna shoot this for my TikTok users, like an Yeah. EduTalk. All right, are you ready? Yeah, You can ready. tell us what you're doing. Cool. Okay. So, like you said, it's a very basic exercise. It could go wrong, but there are very few little things that you need to keep in account. You lie down fully and you make sure that you're not pulling your neck with your hands. तो आप अपना neck कभी ज़्यादा pull नहीं करते हैं. You just keep it a little far away. Pull your abs in, and then you just go for it. And then you also keep your feet together. Killing it. The perfect crunch. Now that you're doing this so easily and I'm walking over so gracefully to you and so comfortably. Are you joining me? Hi, you think? I think it's time for me to chill while you work hard. Listen, हमारी एक killer game है जिसका नाम है the casting crunch. While you're doing these crunches, I'm going to give you scenarios and you're going to tell me who should be cast in these movies. Okay, Are you you ready? hurry. Are you ready? I'm going to hurry. Okay, here we go. The casting crunch. Here we go. A zombie movie. Two zombies fall in love. किसको cast करना चाहिए? Two zombies. हाँ, fall चलो in चलो. love? Do Oh my Shanu God. Sharma proud. Come What on. are the options? वो कोई भी. You think of Any anybody? options? अरे think of somebody. No, you have to feed options. अरे think of somebody. Okay, Ranveer Singh, Arjun Kapoor. Deepika, I think Arjun and Ranveer Singh will be fab. as the zombies who fall in love. Amazing. All right, एक romantic comedy जिसमें You have to fall in love. That I didn't know. एक रोमांटिक कॉमेडी जिसमें तीन लड़कियां सेम बारटेंडर से उनको प्यार हो जाता है. Come on, come तीन on. लड़कियां जिनको सेम बारटेंडर से प्यार हाँ, हो तीन जाता है. लड़कियां. That would be you, me, and Okay, you, me, and Anushka Sharma. Okay, नहीं, she's already found the love of her life, but ठीक है. Oh, okay. Come on. Who's single? Come on. Who's single? Apart from us, it looks like no one. Okay, two suck at soldiers stuck in no man's land. Come on, you can do this. Two soldiers, Tiger and Hrithik. Yes, the sequel of War जो आनी चाहिए. You have killed it, Vani, while doing I am these getting crunches. killed. This casting crunch you I'm have dead. killed. Woohoo! As you can see, I worked really so hard. bad. I'll just You stretch. need a nap now. Thank you. You Thank have you for been having me here. It was such amazing. a pleasure. I really had a good time. on Work It Up and to say This is thank my you. longest workout Ever. session ever. In history? Yeah. Oh And my you God. got me goodies. A whole bunch of goodies, healthy, I'm so things to hungry. keep you more fit, things to make you look more Should I keep it fashionable here? and fit. Back again? I'm gonna take it. Yeah. But listen, जाने से पहले, when are you gonna teach me this step you've been promising? अरे भाई, you know it so I well. don't know it. I'm making a mess of it. चलो बता. But जो भी अभी किया वो सही था. क्या करना है? So you go here, make a Z. Okay, हाँ. So 1, 2, 3, and then And then so then you hop and slide. hop and slide. Hop and See, slide. beautiful. Oh my God. The idea is to make sure that you can wrap your Yeah, that's not gonna happen today. Ranbir Kapoor is hotter than Ranveer Singh. Good morning. TikTok presents the country's first ever EduTalk chat show, Work It Up with Sophie. Now download the TikTok app and follow #EduTalk for lots of ज्ञान and information all about fitness. अगले हफ्ते आपको मिलवाएंगे एक और hot happening fit celebrity से जो अपने diet secrets, fitness secrets और बहुत सारी गपशप शेयर करेंगे. Till then, you stay healthy and don't forget to work it up only on Voot.